Good morning, OPOS stars. Welcome to one more edition of C4P10 Street Food series, where we'll do street food for 4 adults from scratch in less than 10 minutes. Today we'll be doing the Banaras Channa Chaat. So let me start the timer, load it and show you how it's done. Quarter cup of water, and you can use any channa you like. This is the channa sprouts. So you can use the sprouted channa, or you can use channa which has been soaked overnight and washed. You can also use sprouted white channa if you like. A bit of ginger garlic paste, maybe a teaspoon of ginger garlic paste if you like. And so this is how the channa chaat is made. I'll get through this video after I load the bot. Cut potatoes small so it cooks well in 2 to 3 whistles. I mean, 3 thali pannamema. You can peel the potato if you like. I do not like peeling the potato. Just scrub it, wash it really well. That's all that's needed. You can double or even triple this quantity if you want to feed more people, but this would be good enough for around 4 adults. So add some potato and whatever spices you like. Some chili powder, Kashmiri chili powder, some salt, some amchur. The quantities are really up to you. Some cumin powder. It also plays a small pip and make the imli chutney. Garam masala powder. Some tamarind paste, maybe 2 to 3 tablespoons of tamarind paste. Garam masala vendam ungalku. Add some garam masala along with the potatoes and some asafoetida also. Equal amount of jaggery, some Kashmiri chili powder, a bit of salt, and some cumin powder. Mix in some water so this becomes a nice thick sauce. Close, cook on high for 3 to 4 whistles. So now we'll chop the other stuff and I'll take you through the video. Some chopped tomato. அவ்வளோதான் முடிஞ்சது கதை. Correct. Some onions. எல்லாத்துக்குமே வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு போட்டா தான் டேஸ்டா இருக்குமா? அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இது நம்ம இஷ்டத்துக்கு. சவுத் இந்தியனுக்கு எல்லாம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு போட்டால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கா? அதே மாதிரி தான் அதுவும். காய் ப்ராப்பராக குக் ஆச்சுனாலே டேஸ்ட்டுமா. அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டுலாம் மசாலா வேணா போட்டுக்கலாம், வேண்டாட்டி வேண்டாம். இது உருளைக்கிழங்கும் தக்காளியும் கண்டிப்பாக வேண்டியிருக்கு சாட்டுக்கு.
எல்லா சாட்டுக்கும் உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி, சேவு, சாட் மசாலா. காசியில் ஃபேமஸான ஸ்ட்ரீட்டு மெட்ராஸில். ஆமாம், அதே மாதிரி அவன் என்ன பண்ணுறானோ அதே மாதிரி பண்ணுவான். இப்படி போடுறான், ஒரு மேஜிக் மாதிரி. Couple of green chilies or more if you like. இந்த மெட்ராஸில் சென்னா சாட்டெல்லாம் விட பேல்பூரியும் பானிபூரி தான் ஃபேமஸாக இருக்குது இல்லையா? ஏகப்பட்ட சாட் இருக்குமா. Add in a bit of chaat masala, bit of cumin powder. The quantities again just do not matter. Bit of garam masala, some amchur, and some salt. Save is traditionally mixed in and used as a garnish. I'm going to add a bit of save or bhujia, whatever you like, and anything else. If you want to add mooli, if you want to add carrots, it's completely your choice. If you want to add cucumber, it's completely your choice. Add a bit of carrots. A bit of mooli. Bit of cucumber. எலுமிச்சம்பழம் இருக்காமா? And get the chutney ready. So this is some coriander, around 2 to 3 green chilies, I'll emulsify this with a bit of oil. Add a bit of salt, some water, the water is evaporated. Switch this off. Let the pressure settle, or wait at least till we have done the preparatory work. இதை போட்டு மூடுறேன். So that is our coriander chili chutney. If you want to thicken it, you can mix in a thickening agent, some peanuts, or some split Channa dal. So there you go. That will be our green chutney. You can let the pressure settle, but it would have cooked by now. I'm also mixing in a bit of lemon juice. சரி, இதை கலக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பாத்திரம் தான் கொடுங்கம்மா. Open this. This will be our tamarind chutney. Mix it well.
Add a bit of the tamarind chutney to this. Mix it all really well. You'll see that the channa has cooked. See? And the potatoes, of course, have cooked well. All we have to do is mix in everything. A bit of green chutney and all this stuff. And then the channa. Nothing much to clean. All done in around 10 minutes or so. There you go. Enough channa chaat for 4 people. I'll show you how this was done. बताएंगे ले माँ. वाराणसी की बहुत ही ज़्यादा फेमस है और देखो तो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है यहाँ पे पतीले का साइज देखो कितना बड़ा है. So he is doing basically what we have done. तो ये टमाटर कट गए ये I forgot coriander. और ये आगे लाल मिर्च. So तो मैंने पहले कभी नहीं देखा इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चाट बनती हुई. I'll mix both. चना चाट देख सकते I'll add a bit of red chili powder. ಇದು ಕೊಡುತ್ತಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. So some potato, some chutney, some ginger garlic paste, all that we have added. ये आगे का जिंजर गार्लिक पेस्ट. So I'm just duplicating this recipe in OPOS. तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट आ गया और ये अच्छे से मिक्स हो रहे हैं आलू. तो ये चाट जो रहती है आलू और इसके चने की That's चाट potato. Now that the sprouts come in. रहती है. देख सकते हो ये आगे The sprouts have been steamed. Add everything, mix it in, and you are done. डल गए सारे. तो ये चने देख सकते हो ये चने जा रहे हैं बॉईल होने के लिए. So I'm going to just mix in the cilantro, which I missed out. ये आ गया तीसरा पतीला. अरे वाह तो बहुत सारी क्वांटिटी में एक साथ बनते हैं यहाँ पे. Nothing, Lama. Pakai batu. So look at that. Lagay si kita. एक साल तो बनारस के चना चाट यहाँ पे लग चुका है. All done and plated. Look at the quantities. तो आपको जल्दी से लगवाते हैं. तो बात करें थे होना से अंकल जी नाम बता दीजिए अपना. Ultra simple, no? ठीक है तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे. 30 साल हो गए. Try this out and please post your validations. Thank you.